इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप और कई टूर्नामेंट होस्ट करता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब इंडिया को वर्ल्ड कप होस्ट करने के लायक भी नहीं समझा जाता था। क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि 1987 से पहले वर्ल्ड कप होस्ट करना सिर्फ इंग्लैंड का हक माना जाता था? Did you know that the 1987 World Cup was not just a tournament, but a silent revolution in the boards of cricket? And who were the people who brought 1987 World Cup to India? And how they changed cricket not only in India but across the world? Today, Welcome, my name is Sukhpreet Singh Gyani, and you're watching the channel Unfiltered Book Talk. No spoilers, just the core review, the raw, honest truth about books. If it is on my shelf, it's getting a straightforward review. Let's talk about books. today, I want to take you to a moment that changed the Indian cricket forever. The story is not about bat and ball or certain cricket records, but about meetings, negotiations, and quiet courage. This is the story of how India got the 1987 Cricket World Cup. ये कहानी हमें मिलती है रत्नाकर शेट्टी की बुक ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन बीसीसीआई में. What he writes is not just a theory but a lived experience. रत्नाकर शेट्टी हमें बताते हैं कैसे 1987 से पहले इंडिया में क्रिकेट के क्या हालात थे. In early 90s, India was not powerful in the World Cricket Administration. India often had to pay teams to tour the country. And most of the big decisions were taken by England and Australia. And these two boards were so powerful that the World Cup was hosted by England only. At the same time, the author rightly acknowledges 1983 World Cup victory. under Kapil Dev that motivated the BCCI to make a giant leap. Ratnakar Shetty talks about the 1983 World Cup as an impact. He tells us how 1983 वर्ल्ड कप की जीत ने सब कुछ बदल डाला. और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बदली इस वर्ल्ड कप विक्ट्री ने, दैट वाज द सोच, दैट वाज द थॉट प्रोसेस इन बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया. इसने इंडिया को कॉन्फिडेंस दिया, फील्ड पर ही नहीं, फील्ड के बाहर भी. नाउ द स्टेडियम्स वर फुल, television viewership exploded, and the sponsors also started coming forward. While sharing all this information about how India got a chance to host 1987 World Cup, Ratnakar Shetty shares certain details of 1983 World Cup final also. He shared details जिसे हम कह सकते हैं टू वर्ल्ड कप फाइनल के पासेस को ना और क्रिकेट का नक्शा बदल डाला. Let's try and get introduced to the three most prominent persons of that time. N.K.P. Salve. He was the BCCI president from 1982 to 1985 and also a union minister. And जो हमने ऊपर passes की बात करी, it was N.K.P. Salve who was denied extra passes at the 1983 final. And he initiated the move to host the next World Cup in India and Pakistan. Let's also get introduced to another person, Jagmohan Dalmiya. Ratnakar Shetty उन्हें बताते हैं that he was a key administrator who, alongside
N.K.P. Salve and another person, third person जिसे हम अब आगे इंट्रोड्यूस करेंगे, was instrumental in the successful joint bid for the 1987 World Cup, shifting the event's nerve center to Asia. The third person out here is Inderjit Singh Bindra, also a crucial figure in the BCCI. He worked with Salve and Dalmiya to champion the idea of a subcontinent hosted World Cup. Essentially, N.K.P. Salve led as the president, और साथ में दालमिया और आई.एस. बिंद्रा providing major administrative support to make the historic first World Cup outside England a reality. रत्नाकर शेट्टी बताते हैं कि बिंद्रा's political acumen and Dalmiya's financial creativity made them a formidable duo. And we must remember that Inderjit Singh Bindra carried with him additional experience of hosting the 1982 Asian Games. He was a prominent sports administrator who served as the director of the 1982 Asian Games. And he was instrumental in the organization of the event, which was the first major international multi-sport competition hosted by India since 1951. Do you know what was the first multi-sports competition जो इंडिया ने 1951 में होस्ट किया था? कमेंट बॉक्स में ये शेयर कीजिए। और यहां पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, both Dalmiya and Bindra later became presidents of BCCI. Ratnakar Shetty also describes the vision with which N.K.P. Salve, Jagmohan Dalmiya and Inderjit Singh Bindra worked. ये तीनों ने ये समझ लिया था कि रियल पावर ऑफ क्रिकेट कहां पर है. They had understood कि पावर अब ऑडियंस और रेवेन्यू में है. They asked bold questions at International Cricket Council (ICC), for which ICC had all the answers but no opposition. ये क्वेश्चंस क्या थे, ये आंसर्स क्या थे और ऑपोजिशन क्यों ना आई, इसे जानने के लिए बने रहिए इसी एपिसोड के साथ. Why should the biggest cricket audience not host the biggest tournament? उनका मतलब ये था कि इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट की सबसे ज्यादा ऑडियंस थी, तो इन कंट्रीज को वर्ल्ड कप होस्ट करने का चांस क्यों ना मिले. रत्नाकर शेट्टी हमें बताते हैं कि इन तीनों ने एक अलायंस तैयार किया जिसे कहा जाता है द एशियन अलायंस, जिसने कि 87 के वर्ल्ड कप से लेके आज तक का क्रिकेट का सिनेरियो ही बदल दिया. देखिए इन तीनों में कितनी दूरदर्शिता थी. हाउ फोरसाइटेड वर थ्री पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट. द टीम ऑफ साल्वे, दालमिया एंड बिंद्रा डिड नॉट फाइट अलोन. पाकिस्तान के साथ जॉइंट होस्टिंग का प्रपोजल रखा. बहुत कुछ इन दो कंट्रीज के फेवर में बदलना शुरू हो गया, पर जो इंडिया और पाकिस्तान को अपोज कर रहे थे वो जानते थे कि टफेस्ट चैलेंज इज स्टिल टू कम, एंड द टफेस्ट चैलेंज वाज एक्सपेक्टेड टू कम एट द टाइम ऑफ बिडिंग. एंड इन द नेक्स्ट एपिसोड वी शैल डिस्कस, बात करेंगे कि कैसे इंडिया ने बिडिंग प्रोसेस को मैनेज किया और 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया में आया. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है. प्लीज लाइक द वीडियो
शेयर योर कमेंट्स, बिकॉज आपके कमेंट्स ही हमें एक बेहतर एपिसोड बनाने के लिए फीडबैक देते हैं।